Thanks very much, Kripal. And what a day it has been, not just for our women politicians, but every single woman in India. The Nari Shakti Vandan Adhiniyam, or the Women's Reservation Bill, was tabled in the Lok Sabha on the very first day that our elected members entered the new parliament building. But what is this bill and what will it mean for all women? It promises 33% quota for women in parliament and in state legislatures, but so far it is not going to apply either to the Rajya Sabha or to state legislative councils. Now, within this quota, within this 33%, a third of the seats will be kept aside for scheduled castes and scheduled tribes, which means there is a quota within a quota for the backward and the tribals as well. The important thing is that this quota can be implemented only after the first redrawing of constituencies, after the bill becomes law, which means that first there has to be a census, then there will be a delimitation. So ultimately, the implementation of the Women's Reservation Bill will happen not sooner than 2027. However, this Women's Reservation Bill will be in force for 15 years after becoming an act, but its term can be extended. Importantly, the seats reserved for women will be rotated after each delimitation exercise. Today, it has only been tabled. There will hopefully be even more clarity once it is up for debate. But more than anything else, this bill is significant since it caps off a fight that has gone on for almost 3 decades. A fight where half of the electorate, women of the country, said, आधी आबादी पूरा हक. अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं. अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया. कई बार महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है. महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है. इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें. इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं. इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है. मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए. लोकसभा में एक बिल प्रस्तुत किया गया है, वहां पर चर्चा होने के बाद यहां भी आएगा. नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में जो पिछले अनेक वर्षों से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम आज हम सब मिलकर के उठाने जा रहे हैं. बेटियों में जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को अब अवसर मिलना चाहिए. उनके मन में इफ्स एंड बट्स का युग खत्म हो चुका है. Now understand the significance of this bill. It is gender justice and social justice rolled into one. It impacts women nationwide irrespective of caste, social strata and religion, which is why a fight is now underway at 3 levels. 1, to say that this bill ignores a certain religion or it ignores the backward, OBCs are not included. 2,
to say that this is mere window dressing. The actual implementation won't materialize till 2027. And 3, to then say, this is our bill. We are the ones who eventually came up with the idea. The Modi government is only snatching our idea and implementing it. पहले थोड़ा बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की बात थी। शेड्यूल कास्ट तो इजी था उनका, क्योंकि उनको ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन रहने की वजह से 1/3 इजीली उसमें आता था। अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहाँ के महिलाओं को नहीं मिलता। To make a sweeping statement that all parties choose women who are not effective is absolutely unacceptable. I speak on behalf of all our women. Rashtrapati Draupadi Murmu ji is an empowered woman. Every MP of my party is an empowered woman. To make a sweeping statement, it might represent their party, although it had women presidents for their party. In spite of that, they can't have women who are empowered. But I object to him. Yes, the bill is about representation, but its electoral significance also cannot be ignored. Women have always proven to be a strong and a loyal vote bank, and a vote bank that the BJP has assiduously wooed since 2014. That's the reason why you will see the maximum schemes rolled out which targeted women, which is why the triple talaq was made illegal. And that's also the reason why between 2009 and 2019, you have seen the women pay back. The percentage of women who voted for the BJP went up from 21% in 2009 to 36% in 2019. A jump of 15%, and naturally a figure that is inversely proportional to how women then voted for opposition parties like the Congress. And that is the reason why that today the non-BJP parties are distinctly uncomfortable, and they are looking for reasons to tell their women voters, don't think that this is any big deal. It's nothing more than an eyewash. We still love you. देखिए, ये कांग्रेस का बिल है। कांग्रेस लेकर आई थी मार्च 9, 2010 में। हम लोगों ने इसको राज्यसभा से पारित भी करा लिया गया था। 9.5 साल आगे हो गए आपको भाजपा को सत्ता में रहते हुए। ठीक चुनाव से पहले महिला रिजर्वेशन बिल क्यों आपको याद आया? आपकी सोच में तो सत्ता पाना है, लेकिन हम महिला रिजर्वेशन बिल आज सभा पटल पे आता है तो उसका स्वागत करेंगे। पार्टी ने हमेशा समर्थन किया रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं इसमें ओबीसी महिलाओं का भी कोटा निकालें हो। और इससे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि सरकार 9 साल के बाद ये बिल लेकर आई है और ये आने वाले चुनाव में लागू नहीं कर पाएगी। बात ये नहीं, बात इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होनी है, लगभग टाइम लगेगा और आने वाले 2024 चुनाव में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। सरकार की मंशा क्या है इस बिल को इस समय लाने की, इस पर विचार करने की बात है। Now in the fag end of their second term, they have brought this bill, and what is this bill? It just ensures that in fact women are going to be deprived till the next census, till the next delimitation exercise. तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन या उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। मैं एक ट्राइबल स्टेट से बिलोंग करती हूँ, झारखंड से। वहाँ आदिवासियों की भी संख्या अच्छी खासी है और मैं चाहूँगी कि आदिवासी या ST SC OBC ऐसी महिलाओं के लिए भी इस आरक्षण के अंदर कुछ आरक्षण हो, नहीं तो अपर क्लास की महिलाएं पूरा लाभ ले जाएंगी, जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर की महिलाएं या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके घर की महिलाएं, वैसे वाले राज नेता है। तो उसके साथ साथ जो जमीन से जुड़ी ग्रासरूट लेवल की महिलाएं भी फायदा मिले। The question though is, can those parties who sat on this fight for women's representation for over 2 decades today complain about why is it happening in 2027? They delayed it for 2 decades. Now they're talking about a delay of 4 years. Or is this an attempt to pick holes stemming from a fear of what effect this bill
would have on their electoral fortunes. Joining us on the debate, Shazia Almi, spokesperson of the BJP, Ram Kripalji, senior journalist with me in the studio, Abbas Haider, spokesperson of Samajwadi Party, Syed Aseem Waqar, national spokesperson of the AIMIM, Sanjay Jha, author, and political analyst, Dr. Sumansi Raman. But first, before anything else, I actually want to show you a lot of people are today crying copious tears about how they've always stood for women's representation. Let me actually show you where women stand as of today. After over 75 years of independence, where do women actually stand? In Lok Sabha, you have got all of 78 women MPs. Out of 543, only 78 women MPs are there, which is less than 15%. In the Rajya Sabha, you have merely 24 women MPs, which is approximately 14%. And if we talk about assembly across states, when it comes to women MLAs, there are less than 10% women MLAs across the states. Right now, we're talking about 33% reservation, an average of 15% is what we have of women in the assemblies and in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. So, why is the situation like this? Let me ask the first question to Shazia Almi. Shazia Almi, people are questioning you about the timing. Merely 15%. In 2014 itself, you could have increased this 15% to 33%. Why did you wait for now? So first things first, the fact of the matter is that Congress party, which says, and Sonia Gandhi says it rather emphatically, Hamara bill hai, needs to be asked the question as to why she could not build consensus on this bill if she was so close, it was so dear to her heart. Why could she not chide Samajwadi Party and RJD, who use these, this political hiccups, so to speak, as obstacles to ensure the passage of the bill, and when she could do the same for nuclear bill. Okay. She could get that, right? But on this, she did not. So the fact of the matter is that if there was no political will. Two, if you see the last 9.5 years, and you just see right from Mudra Yojana, which the biggest beneficiaries are women, to direct benefit transfers, which are actually in women's name, to Central Awas Yojana, where women get the roof above the head and it's in their name, the houses, to Izzat Ghar, or the dubious distinction of open defecation being done away with, and having 12 crores more toilets. So keeping all that in mind, there is a way to look at how there should be development and integrated development, and not just empowerment for women, but women-led development. Okay, one step at a time. So all those areas having been covered. Okay, so one step at a time, political empowerment. Right. Last 9 years, you have gone step by step. There has been 370. There has been measures for women, and now it has come to Women's Reservation Bill. The point is that today, Mrs. Gandhi says, "Hamara bill hai." What stopped her in 2010 to put everything on the line, to rein in the likes of Samajwadi Party and JDU, say, "Hamara bill hum abhi pass karayenge." In 2010, we will get it passed. Padmaja, first and foremost, I think everyone should admire and appreciate that as a country, at least we recognize that women need more representation. But here are my two short points. Let us not get carried away by all the hype and hoopla. Mr. Modi's government is patriarchal and misogynistic, and do we need any further evidence? Look at the situation of the unfortunate tragedy of the gang rape in Manipur. We saw how this government stonewalled even a dialogue or conversation on that. And the insult to the women wrestlers, the champions who represent this country. And we saw how this Mr. Modi's government actually went out of its way to protect a sexual predator. That is the hard reality of what this government truly thinks of women. So let's not get fooled by this cosmetic attempt. The Congress government was matriarchal and liberal. Why did they not bring in the bill in Lok Sabha in 2010? Okay, here, Padmaja, I was just coming to that point. The and simple let me point quickly is, remind our viewers, quickly let me remind our viewers. Can I answer your question? No, very quick reminder. Who decriminalized homosexuality? The Narendra Modi government, which is patriarchal and misogynistic. Who brought in a law for transgenders? The same patriarchal and misogynistic government, and who has finally had the guts to bring this into the Lok Sabha. It is the same patriarchal and misogynistic government. So sometimes
public posturing works, and sometimes people have to put their money and their government where their mouth is. So let's appreciate it, sir. It's all very well to be a Justin Trudeau and talk about gender justice and grammar, and it takes real guts to actually act on what you mean. Why didn't they do it in 2010? Yeah, Padmaja, now don't interrupt me because I first need to fact check you here. Yeah. You are wrong. You're actually wrong in saying that the BJP government supported the decriminalization of homosexuality. They did not oppose it in the Supreme Court. That is not the same. One minute. Like your government did at a time when people came out of the closet, they went and made homosexuality a crime. But anyway, go on. No, I think, listen, as your response, you asked me a question as an anchor, you cannot interrupt me, right? My question is different, on your program. I deserve some respect. Yeah, I respect you, but answer the question, sir, because you decided to go off track and say somebody is patriarchal and misogynist. I have stated the facts very clearly. The government did not oppose it in the Supreme Court, because of which homosexuality was decriminalized. That is a factual position. Now answer my question. Why did the liberal matriarchal government till 2014 not put their money where their mouth is and bring in the Women's Reservation Bill in the Lok Sabha? Okay, now that you've interrupted me, thrown me off my track, let me continue with my fresh stream of thought. Let me add to that Unnao, where they try to protect a BJP MLA, Kathua and Hathras. I can give you a laundry list of examples of where Mr. Modi's government is on women. And you have a woman spokesperson. I respect Shazia. I hope she will not dodge that. Anyway, this fundamental point, the Congress party brought in the Women's Reservation Bill, passed it in the Raj Sabha. Its political intent was clear. And like Manrega, like Aadhaar, like direct why didn't they pass it in the Lok Sabha? Why didn't they pass it in the Lok Sabha? Because Padmaja, I'm assuming you are aware, the Congress party had 206 members in the Lok Sabha, not 303. If the Congress party had 275, they would have passed the bill. But they had to work with coalition with the same numbers, they put their government on the line for the nuclear deal, but the women weren't worth it. It is all about a set of priorities. More power to the Congress for having power through the nuclear deal bill. Why did they not do the same for women? You are wrong once again. You're wrong once again. Are you aware, Padmaja, that the Women's Reservation Bill went to the Standing Committee? Are you aware that it came from the Standing Committee for conversation? Why, sir? Why did you send it to the Standing Committee? You should have just tabled it in the Lok Sabha. Yes, I am aware. Why didn't they table it in the Lok Sabha? Are you aware that the BJP did not even allow Parliament to function? Are you aware of that? Do you know how many sessions were wiped out? Sir, did the government even have a chance? Sir, yes, they did. Okay, Ram Kripal ji has actually covered Parliament. Let's get the factual position. Ram Kripal ji, क्या ये बात सच है कि सरकार को, मनमोहन जी की सरकार को मौका ही नहीं मिला to bring the bill into the Lok Sabha क्योंकि बीजेपी डिसरप्ट कर रही थी सेशन? देखिए संजय जी, सच्चाई आप भी जानते हैं। विमेन रिजर्वेशन बिल अकेला ऐसा बिल था जिसपे बीजेपी और कांग्रेस दोनों उसके समर्थन में थी, और सिर्फ आरजेडी और समाजवादी पार्टी को छोड़ के एक आध छोटी मोटी और रही हों, करीब करीब सहमति थी। लेकिन चूंकि मुलायम सिंह यादव और लालू यादव इन दोनों ने एक तरह से धमकी दी, उस समर्थन से कांग्रेस चल रही थी। न्यूक्लियर के सवाल पर तो आपने सीपीएम की नाराजगी को भी दांव पे लगा दिया था उस समय, लेकिन इस मामले में बिल्कुल चुप्पी साध ली। और उसके बाद से जब ये चीज आ रही है तो उसके बाद कल तक देखिए, कल सुबह तक जिस दिन से यह घोषणा हुई थी कि एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, तब से कल सवेरे तक हिडन एजेंडा। और जैसे ही पता ये चला, हल्का सा हुआ कि शायद विमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा है, तो हिडन की जगह हमारा एजेंडा। कल तक देखिए शाम तक बिल्कुल बातें बदल गई, और आज सवेरे जयराम रमेश आपको बधाई दे रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। फिर ये लगा कि दफ्तर में मिठाइयां बट रही हैं। आप सुनिए तो, मतलब पराई गाय में गोदान नहीं, किसी और ने टेबल किया, मिठाई आप बांट रहे हो। कल सवेरे तक आपको हिडन एजेंडा लग रहा था, वो हिडन को आपने उसको
वो क्या कहते हैं संपादित किया, उसको हिडन को हमारा लिखा, फिर थोड़ा थोड़ा वक्त बीतता गया, फिर कंफ्यूजन, फिर जब आज सब कुछ हुआ तो उसके बाद तो ये लगा कि ये तो परसेप्शन में बीजेपी ले गई। फिर उसके बाद से शुरू हो गया। आपके ही पार्टी के एक प्रवक्ता भी कहीं कह रही थी कि ये इसमें ये क्यों नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि ये बताइए, ये वही बिल है ना जिसको आपने 2/3 बहुमत से इसको राज्यसभा में पास कराया था। चूंकि लोकसभा में ये रेफरेंस के लिए गया था और उसके बाद लोकसभा भंग हो गई, इसलिए वो खत्म माना जाता है। अब जो भी लीगल पोजीशन हो, जैसा कि आज अमित शाह जी कह रहे थे और अधीर रंजन जी कह रहे थे कभी है जिंदा है, वो कह रहे थे खत्म हो गया, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक बिल जिसको आपने सोनिया गांधी का, जिसको कहते हैं 3 बिल उनके वो चाहती थी, एक लैंड एक्विजिशन बिल, एक फूड सिक्योरिटी बिल और तीसरा वुमेन रिजर्वेशन बिल। ये 2 तो चलिए उन्होंने जाते जाते कराया, 2014 में ही हुआ है सब। और इसके लिए चलिए अगर कोशिश ये भी की गई होती तो ये भी हो जाता, क्योंकि मैं समझ नहीं सकता था जब बीजेपी और कांग्रेस जिस बिल के समर्थन में हो वो बिल क्यों नहीं पास किया गया। And let's be absolutely clear, Mrs. Gandhi in 2010 gave interviews to journalist Sanjay Jha where she has clearly said that everyone was in agreement, including the BJP. Mamta ji's MPs, 2 MPs that she had in the Rajya Sabha, they did not turn up. I don't know what is the reason of her anger. And the Samajwadi Party and JDU opposed it. She has said it on record. So I don't know what opposition from the BJP you are talking about, Sanjay Jha. Padmaja, I talked about the fact that the Congress party did not have the support of all its coalition partners. I'm not trying to, be disingenuous here. The truth is when the BJP introduced it under Vajpayee, so then get them on board or kick them out. Because if women are so important, then get rid of those allies who are saying that women are, those who are whistled at. You do know, right, that Mulayam Singh Yadav actually said that only those women, the kinds who get whistled at, are going to benefit from Women's Reservation Bill. If you cared so much for women, kick out those allies and get the bill passed. Well, Padmaja, shall I start reading out to you the list of very famous BJP MPs, including a young leader from Karnataka who tweeted on the Women's Reservation Bill and what he said? Do you know the number of people within the BJP who are against the bill? Sir, the simple reason that you are is proving my point that the BJP, in the face of internal differences, tabled the bill in the Lok Sabha. The Congress says they care for women, but they still couldn't stand up to problematic and misogynist allies. Let me tell you, everyone here knows the view of the RSS on women. The RSS said women should be Mr. Jha, you are proving my point. If you are saying the RSS is misogynist, then you are showing that the BJP government stood up to the RSS and still tabled the bill. It all boils down to could you table the bill or could you not table the bill? From the very beginning is that for the BJP, this is opportunism. This is opportunism. And tell this BJP spokesperson, Mr. Ram Kripal Singh, that because there are 2 BJP spokesperson on your show, I don't know who he is because I can't see him on the screen. The truth of the matter is that the BJP is pure and simple opportunistic. Still haven't answered my question. The Women's Reservation Bill will not be operational for 5 years. Okay, Shazia Almi, quickly respond. It won't be operational for 5 years. This is just election jumla. Okay, एक line, हाँ. संजय जी, आप बार-बार मुझे कह रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, आप जब पिछला चुनाव हारे थे ना तो आप गा रहे थे चैनल पर कि न सर झुका के जियो और मुंह छुपा के जियो, याद है आपको? मैं पत्रकार हूं भाई, मैं किसी का नहीं। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जो बिल आप लोग लाए थे आपकी पार्टी, वो बिल अगर मोदी जी ने उसको आगे लेके जा रहे हैं, आज की बात बताइए ना, पास होना चाहिए कि नहीं? ऐसा लग रहा है जैसे आज तो आप बहुत नाराज हैं कि ये बिल क्यों आ रहा है। उसका जवाब आपको संक्षेप में दे रहा हूं। आपको याद है आपके प्यारे श्री मोदी जी ने मनरेगा का कैसा अपमान किया था? उसके बाद मनरेगा का ही कारण को ग्रामीण क्षेत्र में जाके वोट मिलते हैं। विमेन बिल पे बात नहीं करेंगे, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे पाखंडी राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। Shazia Almi, quickly respond. This is opportunistic and nothing more than a jumla. It won't be operational till 2027. I really must bring in Syed Asim Waqar. Yes.
Well, they know better than that, which is why they're floundering and they are totally flustered and they don't have an answer. Because these are real facts. They've happened. We've all seen them happen, right? Also, I want to make an important point here. Once again, if they will use the same, same measures to derail the bill, it will not be allowed. And we are watching. Because if you're trying to divide women again on the basis of, religion, caste, and economic status, it will not happen, because this is exactly what you're trying to do surreptitiously. You want to show that you're with it, but you've crumbled under pressure. Shahbano case, did you not crumble under pressure? On this bill particularly. So women were not worth it. Mulayam Singh's friendship and that partnership and coalition was more important than the empowerment of women. And okay, since you bring in the issue of religion, let me bring in Syed Aseem Waqar, because today Asaduddin Owaisi said, what about Muslim women? What about Muslim women? You said, Syed Aseem Waqar Sahab, but I actually want to show you a few data which I'm sure you yourself would be aware of. आपने बात की है कि मुसलमान महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं है. मैं 2009 से 2019 का डेटा देख रही थी. 2019 में AIMIM के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिनमें से एक भी महिला नहीं है, और आपने एक भी महिला को टिकट भी नहीं दिया था. सैयद असीम वकार साहब. अरे कमाल, मतलब पद्मजा, मैं सुनता था आपके बारे में कि आप वाकई बहुत ब्रिलियंट पत्रकार हैं, लेकिन यकीन नहीं होता था, लेकिन हैं आप ब्रिलियंट. मतलब जिस पार्टी ने 3 टिकट बांटे, उसका आप 2009 से 2019 का डाटा चेक कर रही थी, और जिस पार्टी ने 543 टिकट बांटे, बीजेपी ने, उसका डाटा नहीं चेक किया आपने? किया ना, आपके स्क्रीन पे देखिए, टिकट नहीं दिया. 53 टिकट दिए, 53. और जो उत्तर प्रदेश स्टेट है, जहां सबसे ज्यादा लोगों को लगता है कि भाई महिलाओं के खिलाफ है, वहां से सबसे ज्यादा महिला MP आई हैं संसद में. पर बोलिए सर, पूरा डेटा आपके स्क्रीन पे है, आपकी सुविधा के लिए. बात तो सुनिए. देखिए, अगर आपने आधे घंटे बिठा के रखा, मैंने तो आपके जो यहाँ बैठे थे मौजूद, उनसे पूछा ये संजय झा साहब का इंटरव्यू है या हम लोग की डिबेट है? जितने लोगों को बुलाया उनको बराबर वक्त तो दीजिए बात करने का. बोलिए सर. आपने सवाल पूछ लिया, मैंने सुन लिया, अब मेरी बात सुन लीजिए. अब आप बोलिए. आप मेरी बात सुनिए पूरी. 246 राज्यसभा में और 543 लोकसभा में. 543 लोकसभा में कुल 27 MP मुसलमान हैं, जिसमें से 3 मुसलमान महिलाएं हैं, और 246 राज्यसभा में MP हैं, जिसमें से जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो हैं 2. आप अंदाजा लगाइए, 2. मैं तो ये कह रहा हूं कि असद साहब ने ये नहीं कहा खाली मुसलमान, उन्होंने कहा बैकवर्ड्स की बात क्यों नहीं हो रही है. देखिए, अगर आपको आरक्षण देना है तो खाली महिलाओं को नहीं, आबादी के अनुसार दलितों को, बैकवर्ड्स को, OBC जो हैं, जो अनुसूचित जाति है, आदिवासी हैं, मुस्लिम हैं, इनको आबादी के हिसाब से दीजिए. कहीं ऐसा ना हो कि जो आला कौम की, जो आला जाति की महिलाएं हैं, उच्च जाति की महिलाएं हैं, ताकतवर महिलाएं हैं, वो दलितों के, आदिवासियों के, OBC के, अनुसूचित जातियों महिलाओं की सीटों पर कब्जा कर लें, उनके अधिकार छीन लें. इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर आपको महिलाओं को अधिकार देना है तो जातियों, धर्मों के अनुसार दीजिए. अब मैं बोलूं, ऐसा ना हो कि ब्राह्मण और ठाकुर और गुप्ता सब कब्जा कर लें. अच्छा, अब मैं बोलूं, सैयद असीम वकार साहब, आप महिलाओं के पार्टिसिपेशन की और मुस्लिम महिलाओं के पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं. सुनिए सर, होल्ड ऑन ना. सुनिए. अच्छा, बोलिए. सुनिए. 78 लोकसभा में और 25 राज्यसभा में महिलाएं हैं, लगभग हुई 103. इनमें एक डाटा जारी कीजिए कि आज की टाइम में कितनी दलित महिलाएं हैं, इस 103 में कितनी दलित हैं, कितनी आदिवासी हैं, कितनी OBC हैं, कितनी अनुसूचित जाति से और कितनी मुसलमान हैं. आप डाटा जारी कीजिए. आप डेटा जारी कीजिए कि आपने 3 सांसद लड़ाए, कब्जा है. 3 सांसद लड़ाए सर, उन 3 में से एक, माने कि 33%
एक महिला को टिकट दे देते आप। मैडम आपने 3 टिकट दिए तो 3 में से एक महिला को दे देते। तो सुनिए, अरे असीम वकार साहब, आपसे अच्छी तो समाजवादी पार्टी है, उनके भी 3 एमपीस हैं जिनमें से 2 मुसलमान है, 1 महिला है। ज्यादा मुस्लिम हितैषी तो आपसे समाजवादी पार्टी है, उनके शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन 2 मुसलमान 1 महिला एमपी है। आपने तो 1 महिला को ना दिया। बात तो सुनिए, अरे बात तो सुनिए, बोलिए ना। मान लूंगा आपकी बात। मोदी जी से सवाल पूछते हुए डर लगता है? नहीं, मोदी जी से सवाल पूछते हुए डर लगता है? सवाल क्या है? साहब से सवाल पूछते हुए डर नहीं लगता? आप सवाल तो बताइए। सारे जवाब विपक्ष देगा। नहीं, सारे जवाब विपक्ष देगा। अरे सवाल तो बताइए। सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे आप? अरे सर, टिकट आप देते नहीं है। सवाल मोदी जी से पूछिए कि IMIM एक महिला को टिकट क्यों नहीं दे रही। मतलब मोदी जी से थोड़ा पूछूंगी कि IMIM क्यों एक महिला को टिकट नहीं देती। के पास है, सरकार के पास है, तो सवाल भी सरकार से होना चाहिए मैडम। भाई वो थोड़ी ना आपके टिकट बांटेंगे या समाजवादी पार्टी के टिकट बांटेंगे। गरिमा बना के रखिए। कमाल है। पत्रकार हैं सर, गरिमा पत्रकार हैं, गरिमा आप लोकतंत्र का चौथा पाया है कुर्सी का। आप मोदी जी का हत्ता ना बनिए, कमाल है सर, हैंडल ना बनिए आप। यहाँ डेटा दिखा के सवाल पूछो तो आपको ये बताया जाता है कि कौन चौथा स्तंभ है और कौन पहला स्तंभ है। डेटा इज डेटा सर। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, चलिए आपके बिहाफ पे समाजवादी पार्टी से भी पूछ लेती हूँ। कोई डेटा नहीं है। अरे डेटा है भाई, आप डेटा जारी कीजिए। आपने कितनी महिलाओं को, आपकी पार्टी ने जिंदगी में एक महिला को टिकट ना दिया, एक टिकट नहीं दिया आपने महिला को पिछले 15 सालों में। आज हर कोई महिला हितैषी बन करके बैठा हुआ है। टिकट आप देंगे नहीं, टिकट देंगे अपने भाई भतीजे को, फिर बात करेंगे कि महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, लेट मी ब्रिंग इन द समाजवादी पार्टी एज वेल। लेट मी आस्क यू दिस, अब्बास हैदर साहब, दैट यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट OBC representation. In 2010, the bill that was brought in by the Congress, when you were in alliance, did it have OBC representation at that time? Today the Congress is saying अपना ही तो बिल है, उस बिल में, अपने बिल में OBC representation था क्या? Padmaja, Samajwadi Party has always said that we stand by women reservation, but it is important to strike a balance between social justice and gender equality. This is what we have always fought for. And let me tell you, if you could see a statement of Mulayam Singh Yadav ji in the parliament, that clearly states that. And let me tell you, it is nothing, but Bharatiya Janata Party has just struck another can out the road. That's all they have done. Yet another time. Because Bharatiya Janata Party is handing this bill to the coming government, which apparently we are going to make in 2024. They are not going to, actually women of this country are not getting representation what they are supposed to get. They are not getting any representation as of now because they have not done census in 2021. If Bharatiya Janata Party could have done census in 2021, I think the delimitation could have happened, and by 2024 election, women would have got a reservation. Abbas Haider Saab, what a beautiful thing you've said. You should immediately trump the Modi government. And in 2027, when Rahul ji is Prime Minister and Akhilesh ji is Home Minister, you should bring in OBC reservation for women immediately and say, "Humne history बनाई है." What a beautiful thing you've said. If we will come to power, we'll certainly give reservation to OBCs, SC, ST, everybody. Okay, great. Now tell me, you have 2-3, you have women reservation. Now tell me, you have 2-3 seats जिस पे बाइपोल्स हुए हैं. वैसे अभी तो we just said कि आपके 3 MPs हैं, 1 महिला है. उनमें से कितने OBC हैं by the way? एक डिम्पल जी हैं, राज्यसभा में भी महिला हैं, वो तो खुद परिवार से हैं, 2 आपके मुसलमान सांसद हैं. आप ये बताइए, आपके 2-3 बड़े-बड़े बाइपोल हुए हैं, आजमगढ़, मैनपुरी. हाउ मेनी OBCs डिड यू फील्ड फ्रॉम दीज सीट्स? नहीं, आजमगढ़ कौन लड़ा था मैडम? कौन लड़ा? Was that not a OBC candidate? नाम बताइए ना. कौन लड़ा था, आप बताइए. कौन लड़ा था?
धर्मेंद्र यादव लड़े थे। यादव आर नॉट ओबीसी अकॉर्डिंग टू अरे वो तो आपकी फैमिली के हैं सर, आप कमाल कर दिया, आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं और आपने धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया, वो पिछड़े हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली? आप भारतीय जनता पार्टी की फैमिली के बारे में पूछे। यू आर टॉकिंग अबाउट, आर यू कॉलिंग धर्मेंद्र यादव पिछड़ा? दे आर टॉकिंग अबाउट विमेन रिप्रेजेंटेशन। लेट मी टेल यू ओनली 40। डू यू नो व्हाट आर द डिक्लेयर्ड एसेट्स ऑफ धर्मेंद्र यादव? यू आर कॉलिंग हिम पिछड़ा? व्हाई यू आर प्रीचिंग दिस व्हेन यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट? Okay. And let me tell you, in Samajwadi Party, let me tell you a fact. If you read the constitution of Samajwadi Party, 60 to 70% posts in the organization are reserved for women, SC, ST, OBC and minorities. Okay. This is about Samajwadi Party. Let's ask Bharatiya Janata Party. Okay. How much representation they have given to women? Okay, I will ask that to the Bharatiya Janata Party, but I quickly want to bring in Dr. Suman Siraman. Apologies, sir, you've been waiting patiently. You've been waiting patiently. Let's just take a look at how the women's vote has fared over the years. At present, 36% women, the vote went to the BJP and 20% has gone to the Congress. Was this a move to try and consolidate the women's vote further, and is it going to work? Dr. Suman Siraman. Yeah, Padmaja, thank you. I think I would like to take 1 minute uninterrupted. Yes. First of all, this has been a huge anticlimax simply because the expectations were raised. First, we didn't even know what the special session was going to be about. Historic decisions and all were spoken about, and there was a lot of suspense. And now we've got a women's reservation bill which does not have an implementation date. Now, you at the start of the program said 2027. I mean, I'm amazed on what basis you confidently said 2027, because the census of 2021 is yet to begin. So on what basis do we actually say that the 2026 delimitation will be completed by 2027? And even if that happens, the next election by which these, this can be fully implemented, at least at the national level, is 2029. So first of all, this is a kind of a measure to sort of be seen to be doing something without actually doing, delivering the benefit in the near term. It's going to take not less than 5 years, and mind you, delimitation is an extremely emotional exercise. There is no guarantee that the southern states are very firmly against the current formula that is being proposed. So therefore, there is no guarantee delimitation will also be completed in 2026. So let's be clear. What has happened today is symbolic. At some point in future, women will get reservations. And by the way, I want to, for those who said that, this party is against it, that party is against it, I want to draw your attention to a tweet. Sonia ji is holding the nation to ransom just to fulfill her agenda to see the women's reservation bill through. Will her MPs stand up to her? 9th March 2010. Guess whose tweet this is? Certain gentleman by the name of Amit Malviya. So I think that we have to understand that at some stage, every party in this country, BJP, Congress, Samajwadi Party, RJD, they have all been wishy-washy about this and have not pushed for it strong enough. At least the Manmohan Singh government managed to get it through the Rajya Sabha, even though it did not make it through the Lok Sabha. Now that is being rectified. Okay, respond to this, Shazia Almi. Please understand what was the purpose of, could this not, Padmaja, 1 minute. No, I think it was, okay, no, wait, let him finish his point. He came after 35 minutes. Point number 1, he's saying symbolic. Point number 2, Dr. Suman Siraman. Yes, go on, finish your point. Yeah, no, my point is this the only reason for a special session of parliament? If this bill is not going to be implemented before 2027 at the earliest, possibly 2029, could it not have waited till November? Okay. When the winter session of parliament... Okay, respond to both of these points, Shazia Almi. One, it is only symbolic. You've just putting the pot boiling till 2027, saying, oh, we are all for women. Shazia Almi. So that is, it's the most far-fetched and, speculative rambling I've heard so far on this, simply because there is no answer forthcoming. The fact of the matter is, if Sonia Gandhi really was so beholden, as she claims to be, beholden to the idea of passing it, she could have worked on her own party and her partners.
I.N.D.I.A alliance has. No, leave Sonia Gandhi. Answer this, Shazia Almi. The straight charges. Why can't you do it right now? Why can't you do it in 2024? No, because so that maybe you can go to the Lok Sabha. We will have more and more women entering Lok Sabha in 2024. It has to be. No. Sure. But the bill will be out tomorrow. We'll see what it looks like and we will debate it. The fact is delimitation has to happen. There have to be more seats. That is already going to happen, right? So what makes you think is going to be speculation? Could you imagine Article 370 has been abrogated? That we will have a Ram Janam Bhoomi, we will have a Ram Mandir. Okay, everyone responding to you. Everyone responding to you. First, Abbas Haider, then Dr. Sumansi Raman. This is just a small question. Small question, Abbas Haider, yes. No, I have just a small question that when are you going to start census? When are you going to start census? Because only after that something could happen. It is going to take at least 4 or 5 years. So that's the first question. The government has not come up with a plan that when they are going to start census, when they are going to start delimitation, only then this is going to happen. This may go till 2034 or maybe 37 at this speed. This is what I want to ask. And you have, by the way, Bharatiya Janata Party has wasted 1 decade. 1 decade with absolute majority in the parliament. They have wasted 1 decade of the Abbas Haider ji, you know, much as I would have loved the expediting of the bill, I have to say it takes something to come on TV and say Bharatiya Janata Party has wasted a decade after stalling the bill for 13 years. You stopped it in 2010. You said कि सिर्फ women who are privileged will benefit, and now you're saying I want a timetable today. Today I want a timetable. Sir, 2010 you didn't even want the bill. Today you want a full timetable. Anyhow, but answer Shazia Almi. This vagueness is very disconcerting. Why is it so vague? Give a timetable. No, so there will be a timetable. Already some details have been given as to how long will it be relevant for. 15 years, that's what's being said. After delimitation, it will happen. Yes, it is vague right now, but we will see more of it. There will be a formal announcement. There will be a bill in place. There will be a draft there which will be discussed. And it will be for everybody to participate in and to see. Okay. I mean, are you shooting the idea right now? On the one hand, you're congratulating and congratulating yourself. On the other, and trying to take the credit away from BJP. On the other hand, you're trying to shoot the bill saying that this is too vague. Why is there was confusion? Accept it. That has happened. Okay, we've done it. We've delivered. I will come with all the concrete implementation points. सैयद असीम वकार, महिलाओं को अलग-अलग धर्म और जातियों में मत बांटिए, कम से कम अभी महिलाओं को आवाज मिलेगी, ये कह रही हैं शाजिया। देखिए, शाजिया जी से खाली इतना पूछ लीजिए कि अगर कोई महिला दलित घर में पैदा हुई है या आदिवासी घर में पैदा हुई है तो उसको कोई ठाकुर और ब्राह्मण तो मानेगा नहीं, और जो ठाकुर घर में पैदा हुई है, ब्राह्मण घर में पैदा हुई है, मुसलमान घर में पैदा हुई है, वो खुद अपने आप को आदिवासी और दलित नहीं मानेगी। तो जब आपने समाज में ये बना दिया है कि ये आदिवासी है, ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये अनुसूचित है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, तो शाजिया जी के कहने से कुछ नहीं होता। अब सीधी सी बात है, शाजिया जी खाली इतना पूछ लीजिए कि क्या अपर क्लास की और ताकतवर महिलाएं होना चाहिए लोकसभा में? क्या महिलाओं को अधिकार, सब महिलाओं को अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या दलित महिलाएं अपने अनुपात के हिसाब से नहीं जाना चाहिए? क्या आदिवासी जो महिलाएं हैं वो उनकी जाति के अनुपात से उनको नहीं जाना चाहिए? क्या मुसलमान महिलाओं को उनके धर्म और जाति के अनुपात से नहीं जाना चाहिए? आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपने मुसलमान अगर आप भेज रहे हैं महिलाओं को, खत्म नहीं करने दिया। मैं कह रहा हूं कि आपने कहा 180 नहीं, आपने सुनिए इसमें आपने क्या रोल प्ले किया? अरे मैडम, अरे शाजिया जी, मैंने कोई गलत बात नहीं कही है, मेरी बात सुनिए। आपने मेरी बात सुनिए, रास्ता जहरीला कर दिया है। अरे मेरी बात तो सुनिए। हाँ, खूब कर दिया है। और आप मुसलमान, अरे भाई खूब गाली बक लीजिएगा, बात तो सुन लीजिए। देखेगी भी इज्जत के साथ।
अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे आप गाली बक बात तो सुन लीजिए। आप महिला को गाली बक रहे हैं। बात तो सुनिए। आप फिर से आप मैं ये कह रहा हूँ खेलकर फिर से अरे गाली बक लीजिएगा, बात तो सुन लीजिए भाई। कर रहे हैं, चिल्लाने से नहीं होता कुछ। चलाकी कर रहे हैं। पहले बात सुनिए मेरी। चलाकी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस वक्त शाजिया आलमी, प्लीज लेट हिम फिनिश, देन आई विल गिव यू टाइम टू रिस्पॉन्ड। और 78 महिलाओं में सिर्फ 3 महिलाएं जो हैं वो मुसलमान हैं और बाकी सब गैर मुसलमान हैं। तो क्या मुसलमानों को उनका अनुपात के हिसाब से उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? आसिम वकाल जी, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि आपके जितने भी सांसदों के टिकट बटे हैं, ना उसमें कोई दलित महिला है, ना कोई पिछड़ी महिला है, ना उसमें कोई मुसलमान महिला है। आप टीवी पे बैठ करके दलितों की आवाज बनते हैं, मुसलमान महिलाओं की आवाज बनते हैं, पिछड़ों की हिमायती बनते हैं, बट आप खुद कभी टिकट नहीं देते। इनमें से किसी को भी एक बार भी नहीं दिया आपने। मैडम हम सुनिए हम 3 सीट लड़े कुल पिछली बार, पहली बार। एक दलित को दीजिए, एक पिछड़ी को दीजिए, एक महिला को दीजिए। 2019 के चुनाव में 3 सीट लड़ी। अरे सुनिए तो बात, अब आपकी बात सर आंखों पर। हम तो चाह रहे हैं कि आपकी दुआ लग जाए हमको, हम 543 सीटें लड़े तो हम तो आधी दे देंगे महिलाओं को। ओके, आप दुआ तो कीजिए हमारे लिए। लेकिन यही सवाल मोदी जी से क्यों नहीं पूछती हैं आप कि मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देते? अच्छा, असल तो वैसे ही पूछ ले तो उनसे आप डंडा लेके खड़ी हो जाती हैं, लेकिन मोदी जी से सवाल बनता है नहीं बनता है। चलिए सर, आपका सवाल है, बेहद वाजिब है। The only difference, let me remind you, is that he has stated very clearly, I will give on the basis of winnability, whether it be the 53 women that I give it to, or whether it be a Muslim or a Dalit or a Pichra. The final question I will ask to Ram Kripal ji. Ram Kripal ji, here is some more data. Of the women candidates who were fielded, 41% were those who had a family background. And of the women who won, 30% had a family background. And this is across the board. चाहे वो बीजेपी और कांग्रेस की हो, वो जिसको so called कहते हैं डायनेस्टी से आती हैं। Is this a very real fear कि अब ये जो 33% महिलाएं हैं, और बार बार समाजवादी पार्टी AIMIM कह रहे हैं कि सिर्फ ये बड़े घरों की महिलाएं चली जाएंगी, एक्चुअल बैकवर्ड महिला को वॉइस नहीं मिलेगी। देखिए पद्मजा जी, आज का दिन एक ऐसा दिन था, कम से कम लोग इस बात को तो मानते कि हम चलो एक ही कदम सही आगे तो बढ़े हैं। कोई भी परिवर्तन 2 तरह का होता है, आप साइंस में भी देख लीजिए, विज्ञान में भी। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। आज महिलाओं का दिन, सबको एक खुशी हुई है। देखिए कुछ चीजें परसेप्शन में जो होती है ना, नाक भी होती है, पेट भी होती है, एक भूख भी होती है, ऐसे एक नाक भी होती है जो सम्मान के लिए होती है। मैं जैसे अभी लोग कह रहे हैं कि हजारों साल की अब जो कुप्रथाएं आज सबको याद आ रही हैं। अरे भाई, आज एक ऐसा काम हुआ है, संविधान में महिलाओं के हक के लिए एक कानून बनने जा रहा है। अब रही बात इसकी, अब आप कह लीजिए कि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, बहुत सारी कमियां होंगी निश्चित तौर पर। लेकिन सबसे पहली बात यह, देखिए गांधी जी ने जब उनको अब साउथ अफ्रीका में उनको एक किताब दी गई थी, अनटू दिस लास्ट, जोहानिसबर्ग स्टेशन पर, जहां से उनकी जिंदगी चेंज हुई। और गांधी जी हमेशा कहते रहे उस आखिरी व्यक्ति को। तो क्या मैं मान लूं कि इस पूरी धरती का आखिरी व्यक्ति बिल्कुल संपन्न हो गया? अरे हम उस दिशा में प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैं सारी ग्रीवांसेस आप लोगों की मानता हूं, लेकिन कृपया ये तो मानिए ना कि एक आधी आबादी को हम मैत्रेयी और गार्गी की बात सुनते थे, आज की तारीख में अगर एक कदम भी कोई बढ़ रहा है तो उसका स्वागत कीजिए। आलोचना के लिए बहुत दिन पड़े हुए हैं। And there's a very simple solution. If you think that women who are backward, who are Muslims, are not getting representation, the quota will soon be there. Ensure that all your candidates come from all of these societies, all of these communities. Simplest solution. I'll leave it at that. Unfortunately, I'm completely out of time. But thanks very much, all gentlemen. Shaizia Almi for joining me. Let's hope this is a right direction, a step in the right direction, and taken none too soon. Thanks for watching.